आज का हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है, सर्वर इंस्टॉलेशन, इंस्टॉल कॉन्फ़िगर डीएनएस। और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे छूटेगा नहीं, बल्कि सभी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएंगे। दूसरी बात, सारे क्वेश्चंस निमी के हैं, और निमी क्वेश्चन बोलने का मतलब ये आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं, एकदम परीक्षा में कॉपी आपके यही क्वेश्चन आने वाले हैं। बिल्कुल भी चीज़ों को आपको समझ लेना है। दूसरी बात, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना है, ताकि हमको भी क्या मिले, मोटिवेशन मिले, इंस्पिरेशन मिले आपके लाइक्स से। अब क्या है, अब लास्ट वाला एक इंस्ट्रक्शन क्या है, जहाँ पर आपको ब्लू मार्क दिख रहा है वही है उस क्वेश्चन का करेक्ट वाला ऑप्शन है। बिल्कुल भी आपको चीज़ों को समझ करके चलना है। अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पावरफुल सेंट्रल कंप्यूटर और नेटवर्क, करेक्ट ऑप्शन सर्वर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द सर्वर, करेक्ट ऑप्शन a computer program. Question number 3, which program runs on the local machine requesting service from the server, correct option client. Question number 4, which one is not an advantage of client server networks, correct option traffic congestion. Question number 5, which model provides the network service to client to perform tasks, correct option client server model. Question number 6, which hardware is not requested for installing Windows Server 2008, correct option scanner. Question number 7, which one is not a web server, correct option MS Office. Question number 8, what is the next step for server after the window, correct option configuration. Question number 9, which option is not correct while configuration of Windows Server, correct option connect computer to Bluetooth. Question number 10, which company developed active documentary, correct option Microsoft Directory, correct option इसका कौन सा है, Microsoft. Question number 11, which application protocol used to access and maintain directory services over a network, correct option LDAP. Question number 12, what is the full form of ADDS, correct option Active Directory Domain Service. Question number 13, who translate domain name to IP address so browser can load internet resources, correct option domain name system. Question number 14, which one is a type of DNS services, correct option कौन सा है, authoritative DNS. Question number 15, how many types of DNS service in network, correct option 2. Question number 16, what is the type of .com domain, correct option कौन सा है, commercial organizations. Question number 17, which process converts host name into its equivalent IP address, correct option कौन सा है, name resolution. Question number 18, what is the distributed hierarchical naming system for computers, correct option and DNS. Question number 19, what is the name of second part of email address, correct option domain name. Question number 20, who maintains DNS, correct option distributed database system. Question number 21, what does a DNS client, correct option DNS resolver. Question number 22, what is the level of domain in www.microsoft.com, correct option top level domain. Question number 23, which one is not a country top level domain, correct option .ab. Question number 24, what is assigned by DHCP to the clients, correct option IP address. Question number 25, how many types of IP addresses assigned by DHCP, correct option 3. Question number 26, which layer protocol DCHP is, correct option application. Question number 27, which parameter is not assigned by DHCP, correct option CCL. Question number 28, which one is not a part of DHCP, correct option hub. Question number 29, what is the form of BOOTP, correct option bootstrap protocol. Question number 30, what is the process followed while assign an IP address to the client by DHCP, correct option DORA. Question number 31, what is the full form of DORA in DHCP, correct option discovered office request acknowledge. Question number 32, what is the default subnet mask for class C network, correct option 255.255.255.0 इसका करेक्ट ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 33, what is the total number of bits for n divided w id iv/host for class A n/w, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है 8/24. और इस तरह से हमारे क्या है, इस मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन यहीं पर हमारे खत्म हो जाते हैं. और नेक्स्ट मॉड्यूल का आपको क्या करना है, वीडियो देखने के लिए सिंपली क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपका हमारे चैनल से छूटे नहीं. इससे क्या होगा, कुछ यदि छूट जाएगा तो बहुत सारे आपके क्वेश्चन स्किप हो जाएंगे और आपके परीक्षा में मार्क्स कम आ सकते हैं.
इस वजह से हम आपको ये चीज़ें बार बार आपको बताते रहते हैं ताकि आपका कोई भी परीक्षा में मार्क्स छूटे नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद आपका। और क्या करना है, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है।